Are you exploring career opportunities in prestigious regulatory bodies? I can assure you that IRDI could be one of those opportunities that you can go for. And in this video, we are going to discuss three unbeatable benefits with respect to IRDI that makes it not just a job but a fulfilling career choice. And it is going to be very helpful for those aspirants who are still at the awareness stage and are yet to shortlist those examinations that they would like to appear for. But before we discuss all these things, here is an important information that previous year papers play very important role with respect to the preparation for any competitive exam including IRDI grade A. So what you can do, you can go to the description box, click over the link, and from there you can download these PYQs. They are going to be very effective. Now moving forward, let us see the first key benefit. And the first benefit is that IRDI is a smaller close-knit organization as compared to other regulatory bodies. But why is it so? Because if we talk about IRDI, the strength is around 400 with respect to employees. And what is the reason? Because we know that IRDI works exclusively in the insurance sector only, right? And that is why the strength is very much limited. And I would say this is a plus sign. Why it is a plus sign? Because firstly, whatever work you are going to do, it is going to get recognized. It is going to be more visible as compared to other regulatory bodies, and people often know each other इन केस ऑफ IRDI बिकॉज कम लोग हैं काम करने वाले एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लोग एक दूसरे को जानते हैं और जो भी आप काम करोगे द वर्क इज गोइंग टू गेट रिकॉग्नाइज्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, yes, the promotion, the growth, all such kind of opportunities are going to be great when it comes to IRDI. So basically, it is the first benefit with respect to IRDI that it is a close knit smaller organization as compared to other regulatory bodies. द सेकेंड बेनिफिट इज रिगार्डिंग सपोर्टिव वर्क कल्चर. अब सपोर्टिव वर्क कल्चर क्यों है? सबसे पहले तो अगर हम वर्कलोड की बात करें, द वर्कलोड इज अराउंड 8 आवर्स, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें. ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड वर्कलोड है, वर्कलोड मैनेजेबल है एंड टाइमिंग्स आर नॉर्मली फॉर 8 आवर्स ओनली. एंड आई वुड से जो काम करने का प्रेशर है यहाँ पर, फाइन, द रिजिडनेस इज नॉट देयर एज कम्पेयर टू अदर रेगुलेटरी बॉडीज. और ये हमें कहाँ से पता चली ये चीज़ें हमें पता चली है फ्रॉम डॉक्टर मल्लिकार्जुन, who has basically experience of working in NABARD, RBI, and apart from that IRDI also. तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं. एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, इनकी वीडियो देखोगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ही ऑल्सो सेड दैट बेसिकली देर इज लेस ऑफिस पॉलिटिक्स इन केस ऑफ IRDI एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. अब ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका एक्सपीरियंस कह रहा है. एंड आई वुड एनकरेज टू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया दैट what kind of supportive work culture is there in IRDI, and there is, I would say, a lot of flexibility with respect to, I would say, the work culture. And apart from that, the office politics is very less, as I have told you. द थर्ड इज रिगार्डिंग, आई वुड से, द पोस्टिंग स्टेबिलिटी. अगर आप कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढ रहे हो कि यार जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स ना हो और आप कहीं ना कहीं एक पोस्टिंग्स के पैरामीटर से आपके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी रहे, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते बार बार यहाँ से वहाँ पोस्टिंग जाना, तो उनके लिए भी ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट IRDI, वी नो दैट IRDI हेडक्वार्टर्स आर इन हैदराबाद. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, आई वुड से, आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द करियर इन हैदराबाद ओनली एंड इन IRDI हेडक्वार्टर्स ओनली. और नो डाउट कि आपको पोस्ट ट्रांसफर का भी बीच बीच में मौका मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई. बट आई वुड से द मेजॉरिटी ऑफ द करियर इज गोइंग टू बी इन IRDI ओनली विच इज इन हैदराबाद. फाइन. एंड ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टाइम 8 घंटे का है और बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है एज कम्पेयर टू अदर रेगुलेटरी बॉडीज. और इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में, तो ये वीडियो ज़रूर देखना जाकर, क्योंकि इसमें सर ने बहुत डिटेल में बताया है कि आप किस तरह से IRDI में जब काम करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी योर रूटीन, also sort of things you are going to see as a part of that video. I hope it is clear to you. So this is from my end, and I hope the video was helpful for all of you, and it was a very short video. Now before I end the session, here is a small announcement that basically how EduTap can help you as a part of your preparation. But before I show you the course and before I show you the different type of, I would say, the content with respect to IRDI grade A regarding EduTap, I would also like to say that from 13th of August till 15th of August, Freedom Sale is going on our website, and it is going to provide huge discount with respect to different competitive exams including regulatory bodies. So what you can do, you can go to the website and you can open these courses, and you can see different types of courses are there. For example, IRDI Silver course where you can prepare for phase 2 only, for IRDI Gold course which includes content with respect to both phase 1 and phase 2. Here you can avail discount, huge discount you can avail by using the coupon code India72. Please remember this coupon code. The coupon code is India
72. This is something that you can use in order to avail the discount, in order to avail the offer, and that is it from my end. If you have any other question, if you have any other query, you can of course write it in the comment box. Apart from that, I would like to say, if you want to see the combo courses also, for example, you want to prepare RBI and IRDS simultaneously, or maybe RBI, IRDI, and NABARD simultaneously. So what you can do, you can go through combo courses also. Rest of the details can be available over here. But as I told you, I have already told you the coupon code India72. You can just apply this coupon code and you can avail the maximum discount that is available to you. So I hope it is clear to you, and thank you so much and all the best.